In this video class, we will learn about data types in Python, which is very, very important. So, in Python, there are two types of data types. One is called fundamental or basic, and another is called derived data types. But in this class, we are going to learn about only basic data types or fundamental data types in Python. So, let's get started and understand and learn about all the basic data types in Python. So there are two types of data types. One is called fundamental data types. One is called derived data types. दोनों में क्या difference है? I will talk about later. So fundamental क्या होता है कि it is given by the language. हर एक language का अपना data types होता है, ठीक है? और फंडामेंटल में क्या होता है कि वी डील विद जस्ट वन टाइप, मतलब उसमें कलेक्शन नहीं होता, जैसे सिंगल, जैसे मान लो कि 5 है, 5 एक वैल्यू है, मान लो 10 है, दो वैल्यू, एक वैल्यू है, ठीक है? तो जहां एक सिंगल वैल्यू, मतलब एक सिंगल वैल्यू को मुझे मैनेज करना है, सिंगल वैल्यू, देन वी कॉल इट फंडामेंटल. ओके, लेट्स सपोज आई हैव अ कलेक्शन, मतलब मेरे मान लो कि मेरे आई हैव अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, ओके, आई हैव अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट. तो जहां भी सीक्वेंस, जहां भी कलेक्शन आता है, तो वहां पर हम लोग डिराइव्ड यूज करते हैं, ठीक है? फंडामेंटल कहां पर यूज करते हैं? जहां पर एक सिंगल डेटा है, ठीक है? वी आर नॉट डीलिंग विथ मल्टीपल डेटा, वी आर डीलिंग विथ सिंगल डेटा, देन वहां पर हम लोग फंडामेंटल यूज करेंगे. और जहां पर मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल कलेक्शंस है, ग्रुप ऑफ कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ डेटा है, वहां पर हम लोग डिराइव्ड यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल लिस्ट है, टपल है, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. ओके, सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल, जहां पर वी विल डील विद वन सिंगल डेटा, एक डेटा के साथ डील करेंगे. तो व्हाट आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स? लाइक इंट, वी हैव ऑलरेडी सीन, इंट है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बुलियन है, string है, and non. So these are the fundamental data types in Python. We will saw one by one: int, float, complex, boolean, string, and non. Okay, and what are derives? Derives are for dealing with multiple data, group of data, like list, tuple, dictionary, range, bytes, bytes array, set, frozen set. Okay, so हम लोग we will not talk about this one. Bytes के बाद हम लोग बात नहीं करेंगे, because this is not for us, this is not required for us. Only we require this one, like list, tuple, dictionary and range. ये हम लोग को आना चाहिए. Okay, so we will talk about list, tuple, dictionary, range, and we will talk about all the fundamental. Okay, now let's talk about the fundamental. For example, int. Int is very simple. So integer क्या होता है? It's an integer kind of data type. Okay, it has no any decimal part. और इसमें फ्रैक्शन में, इसमें पॉइंट नहीं आएगा, which is integer, pure integer है इसमें, without any decimal point, without any fraction, then we call it integer. Okay, integer can be either positive integer, it can be either negative integer, or it can be zero. तो इसमें फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है? इट इज नॉट अ फ्रैक्शनल, डिसिमल नहीं होना चाहिए, इट्स अ प्योर होल नंबर, रियल नंबर. ओके, so for example 10 is an integer number, -10 is an integer number, 0 is an integer number. Okay, for example here देखो, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, in a is equal to 10, मतलब a is a variable name, और a में मैं क्या असाइन कर रहा हूँ? 10 असाइन कर रहा हूँ. दिस इज माय सिंगल डेटा टाइप. ओके, int टाइप. ओके, so this, if you assign 10 into a, so a become as a int type. Okay, Python में क्या होता है? There is a function, there is a special function called type function. Just remember this. Okay, type function, type, type. Okay, तो अगर मान लो किसी भी डेटा का तुमको डेटा टाइप चेक करना है कि ये डेटा टाइप क्या है, ये इंट है, फ्लोट है, स्ट्रिंग, व्हाट इज द डेटा टाइप? ओके, सो फॉर दैट पर्पस वी यूज टाइप. So type is a function to check what is the current data type of that variable. Okay, you got this point? इसको कैसे लिखते हैं? Okay, so this is the way. Suppose I want to type, so type type, this is my function, and opening parenthesis and closing parenthesis. ठीक है, हर एक function, each function you have to give the function name, and each function should have associated opening parenthesis and closing parenthesis. उसको हम लोग बाद में बात करेंगे, we will talk about later. But for right now, just memorize this. There's a type function, okay, and from the type function we can figure out what is the type of that variable. For example, a is my variable, okay,
and A is storing 10 which is integer. I want to check the type, so क्या करेंगे, टाइप में हम लोग A पास कर देंगे, ठीक है, ओके, और इसको प्रिंट में डाल दें, इसको प्रिंट कर देंगे. इफ आई डू प्रिंट लाइक प्रिंट opening parenthesis and closing parenthesis, so this will print the type of A. A का type क्या है? We got this point? So exactly I'm same thing I'm doing here. Okay. So for integer, it's very easy. You can either take positive integer, negative integer, or zero. Okay. And assign this into some variable. So this becomes an integer type. And how to check the type? Using type function like this. Another is called float. Okay. इसमें इसमें एक स्पेशल फंक्शन होता है dir. ठीक है, dir it is called directory. Okay. So actually see, in Python, A is a data type. Okay. So actually Python में क्या होता है, everything is object. We will talk about object क्या होता है. So everything is object. So A integer is a kind of object. ठीक है. तो इसमें इस जो A, whatever A we are writing here, okay. So what are the different functions? Okay. Every object has some functions. Okay. तो मुझे जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए. तो उसके लिए फंक्शन होता है डी आई आर. ठीक है, डी आई आर. इफ यू टाइप अ डी आई Sir, आर, I was disconnected, sir. I was yeah, disconnected. if you put Can you dir, please then it explain? will print all the functions. Let me give some example. Similar to that, we have fraction, decimal. Okay. See, I'm using all the property. Numerator, you can use all the property. Okay. Now come to float. So float में क्या होता है? Just like a decimal, just like an integer, it is another data type, and but here it will have some fraction part. Okay. Integer में क्या था? There was no fraction, there was no dot, no fraction. But in case of float, it has some fraction. So हम कैसे declare करते हैं? Any number 10.20. This is my fraction. Okay. This is my data type. So same thing you can assign here in A. I'm checking the type. What is my type? It will say your fraction float. It will say float data type. And dir you can do again dir, you can it will print all the properties just like that. Okay, same thing. So anything, only difference between integer is just it has no fraction part. Okay, it says whole number, real number, and float has a fraction part. That's all. And yeah, next is complex. Okay, so complex is a mathematical, I think आपने 10th में पढ़ा होगा complex number. Complex number में क्या होता है, एक real number होता है, एक imaginary number होता है. ठीक है, इसको denote कैसे करते हैं? A plus bj, तो उसमें j होता है, j is called imaginary part. ठीक है, इसको इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं? इन पाइथन 10 एनी रियल नंबर प्लस, और इट कैन बी माइनस एज वेल, प्लस और माइनस हो सकते हैं, प्लस 20j. इसमें j इट शुड बी j. ओके, ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी j, दैट इज द इमेजिनरी पार्ट. ठीक है, so this is the way of writing complex number. So generally we in data science you will not deal with complex number. This is for mathematics. All the mathematician use this complex number. So again, this is my complex number. Okay, and I want to check the type, so you can do the type. And I want to check all the operation. You can use dir function. So this way you will come to know everything. Okay, so complex number is not is our area of interest. I'm skipping that part. Okay, now come to none. What is none? Okay, none. Okay, so none क्या होता है? None is for represent the missing value. ठीक है, लेट्स सपोज मैंने लिखा है a इक्वल टू 10. ठीक है, तो मुझे अभी आई नो दैट कि a का वैल्यू क्या है. a का वैल्यू 10 है, आई नो दैट. ठीक है, बट इन सम सिचुएशन क्या होता है कि आई डोंट नो इन एडवांस कि a का वैल्यू क्या होगा, उसका उसमें कभी कभी उसका वैल्यू मिसिंग होता है. जैसे मान लो, जैसे लेट्स सपोज आप यू आर डीलिंग विद डेटा. ओके, यू डीलिंग विद एम्प्लॉय डेटा. ठीक है, एम्प्लॉय में क्या क्या प्रॉपर्टी है? उसका एज है, उसका नेम है, उसका सैलरी है. ठीक है, उसका सेक्स है, मेल और फीमेल, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स. ओके, सो लेट्स सपोज in the group of let's suppose 200 employee. Okay, लेट्स सपोज किसी का सैलरी मुझे पता नहीं है, मैं डेटा को डील कर रहा हूँ. ओके, एंड एट दैट टाइम आई नो सैलरी ऑफ कपल ऑफ एम्प्लॉय, but few employee or don't know the salary.
ठीक है, तो उस केस में क्या करना होगा कि अगर वो वैल्यू मुझे मिसिंग है, आई डोंट नो कि उसका सैलरी एग्जैक्ट क्या है, तो इन दैट केस आई कैन यूज नन। ठीक है, तो एनीथिंग विच इज मिसिंग, विच इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, अभी उसका वैल्यू अवेलेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर आई कैन नो, ओके, उसका वैल्यू कुछ हो सकता है, आई डोंट नो अभी क्या है, बट इन फ्यूचर इट कैन बी सम वैल्यू, इट कैन स्टोर सम वैल्यू, तो उस केस में हम लोग नॉन यूज करते हैं। ओके, सो हाउ टू डिक्लेयर दैट, सी मान लो लेट्स सपोज दिस वन, लेट्स सपोज इफ आई से a is equal to none, इसको सिंपल क्या करते हैं, a is equal to none, दिस इज द सिंटेक्स none, ओके, एंड प्रिंट a, it will print none. If you want to check the type of this, just put type of a, okay, it's a non type. Let's say the boolean type, okay, boolean क्या होता है, it can be either true or false. If I say boolean मतलब truth, उसका truth क्या है, okay, let's suppose I say any statement like PM Narendra Modi is the Prime Minister of India, it's a true statement or false statement, it's a true statement, so ये true होगा। तो boolean का दो ही वैल्यू होता है, it has just two value possible, either it can be true or either it can be a false, okay। तो पाइथन में क्या होता है कि इफ एनी नंबर, लेट्स सपोज इफ इट टू 1, तो 1 इज ऑलवेज ट्रू, ओके, और एनी नंबर 0 इट इज ऑलवेज फॉल्स, ओके, एनी इंटीजर विच इज 0 इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है, अगर कोई इंटीजर है वो हमेशा फॉल्स होगा, और अदर देन 0 इज ऑलवेज ट्रू, okay, float, if I say 0.0, this is always false and rest are always true. If I say complex 0 plus 0j, this is always false and rest are always true. If I say none is always false, okay. If I say string, okay, if I take empty string, okay, only double, only quote, then empty string is always false, okay, but if we take some space, in दोनों में difference है, okay, if I, in this case there's an empty string, there's no content inside that, then it is a false. बट इफ आई से स्पेस, यहाँ पर क्या है कि इन दिस डबल कोट के बीच में स्पेस है, टैब है, ठीक है, सो दिस स्ट्रिंग कंटेन सम वैल्यू, it can be some tab, it can be some blank value, whatever, so it contains some value, it case में it will be a true, okay, and all the list tuple से dictionary जो empty है, everything which is empty like empty list, empty tuple, empty set, empty dictionary, everything which is empty is false and rest are all true, okay. For example, see, okay, there is one function called bool function, okay. Bool function क्या करता है कि it converts you into it gives you the boolean value explicitly. For example, यहाँ example दिया हूँ, for example, see, none, okay, boolean में मैं क्या पास कर रहा हूँ, I'm passing none, तो none का वैल्यू क्या होगा हमेशा, okay, it's a list basically. Let's suppose, let me make a change here, bool, ठीक है, I'm passing here none, okay, none data type, so none का वैल्यू हमेशा क्या होता है, false होता है, it's a false. Let's suppose I'm passing 1, 1 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ट्रू होगा, ट्रू होगा। Let's suppose I'm passing 0, 0 का वैल्यू क्या होगा, हमेशा false होगा, ठीक है। Let's suppose I'm passing 0.0 फ्रैक्शन, इसका वैल्यू क्या होगा, false होगा, okay। Let's suppose I'm passing 0 complex number, 0 plus 0j, इसका वैल्यू क्या होगा, false होगा, complex number, okay। Let's suppose I'm taking a empty list, list मिल रहा हूँ, ठीक है, empty list like this, it will be a false, ठीक है। Let's suppose I'm taking a empty string, okay, only string, empty string, double quote, it will be false. Let's suppose I'm taking a string with some tab, some with a space, इसके अंदर space है, it will be true. You getting this, okay? So this is the concept of boolean, true, either it can be true or false, और true कब होता है, और false कब होता है, this is a rule, okay।